Good evening, friends. Is love enough? If not, what else is there? क्या एक रिश्ते में प्यार होना काफी है? और अगर नहीं, तो और क्या चाहिए? A very good evening and happy Valentine's to all the couples out there, whatever shade of love they are in love with, and those who are single by choice and in a beautiful relationship with themselves. This is for you all. I'm your host, Maya, and I'm going to introduce you to a very special guest today. It's going to be more of a discussion than an interview where we are going to dive deep into the meaning of love and figure out if love itself is the only ingredient for a healthy relationship or there's something else that carries equal importance. Let's welcome Raksha Bharadia, who is a relationship expert and a writer. Welcome to the show, Raksha. Tell us a little more about yourself and Bonobology. Thank you, Maya. Thank you for having me on Midnight Latte. So, just a little correction. Actually, I'm an author, and मैंने एक किताब लिखी है, Chaos, for which I interviewed a lot of people all over the country, which is. I've gone through the book, yes. So, actually, ये जो couple relationship है ना, or any kind of relationship, which is over a span of years, which is not mother-child or siblings, जिसमें जरूरी नहीं है कि आप साथ रहें because of blood. So that relationship has always intrigued me. So I'm not an expert, but because of Bonobology, which is basically a website on only couple relationships, we've got a lot of queries, lot of user-generated content, जिसमें उन्होंने हमसे questions पूछे हैं, हमारे लिए pieces लिखे हैं. और फिर ये किताब के लिए जब मैं पूरी country में घूमी, to sexologists, to marriage therapists, to historians, to relationship coaches, तब मैंने उन्हें पूछा कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है आजकल, what are the issues couples are having. So ये सबको मिला जुला के जो मेरी understanding है, that is what I can bring to you. So basically I have written Chicken Soup for the Indian Soul series. So वो भी relationship पे ही थी कि how to have a good relationship with yourself, and basically those were inspirational stories. उसमें भी हमने romantic soul की, and her title में couple relationship के pieces तो होते ही थे. I have done a couple of other books for Rupa. So, I have done fiction, non-fiction, one on parenting. But ये जो Chaos जो किताब है ना, ये मेरे दिल के सबसे करीब है, because I honestly feel, Maya, कि इंडिया में जो हमारी रोटी, कपड़ा और मकान की जो जरूरत थी ना, वो तो अब तकरीबन हो गई है पूरी. Once those needs get addressed, then we feel like looking at other things. तब हमें लगता है अरे हमारा relationship में क्या problem है, because अब तक तो वो luxury ही नहीं थी कि couple सोचे, because वो बड़ों को संभालना था, बच्चों को स्कूल में डालना था, both of them like came together, pulled in their resources to kind of make everything neat. पर अभी थोड़ा spare भी है, individuality भी है, education भी है. So couples have started asking कि हमारे life में love है क्या 10-15 years down the line. So that is what really intrigued me. True. So Raksha, we chose to touch this nerve, love, which arguably is what makes us wake up every morning with a glitter of hope in our eyes. And people meet, they share smiles, they share experiences, they fall in love. So getting to know each other by and by, bit by bit, day by day, is like exploring an island for the first time ever. एक जो शेर भी आपने सुना होगा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अच्छा खासा मूड आपका आज मुझे दिखाई दे रहा है, और मैं उसको और अच्छा करने वाली हूँ कुछ शेर व शायरी सुनाकर. जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है. सच्ची. तो जिस्म से दिल तक का ये जो सफर है, ये जितना रोमानी है उतना ही मुश्किल भी है, और मुश्किल तब बढ़ती जाती है जब ये सफर आगे बढ़ता जाता है. तो सवाल ये उठता है कि प्यार काफी है, जैसा कि आपने कहा कि because now we have access and we have come out of that zone where we used to be loaded with responsibilities of the family and raising our children and a joint family and joint adventures and all those things where the duties had been confined according to the role played respectively by husband and wife. But here we are at leisure, we have a lot of time, and then we have
means that depth to find out whether we are happy with the relationship we are in or not. So, what are the other factors, Raksha, important in a good relationship besides love, which is the very foundation, or is it only love? Does that Okay. So मैं एक बार LA गई थी. So I had a very 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 intense and a very sensitive driver. वो हमारा taxi driver था. So he'd had some 6-7 divorces, जो कि खैर अमेरिका के लिए तो yeah. And also he was really in love several times, but he was a very wise man. जब हम मिले, then I think he was about 65, because I remember asking him his age. तब उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात की थी. Probably love या romance, आप जो भी कहे, this gets two people together. It acts like जो टॉर्क होती है ना, जो बैटरी से जो गाड़ी एक बार चालू होती है. But once two people are together, is love enough to carry the relationship on? So from my understanding, Maya, and also the innumerable requests and questions I've got, I don't think so. In fact, I think हम love को बहुत misuse करते हैं. So I had interviewed Dr. Kushal Jain. He's a psychiatrist with at that point with Wim Hans. Now he has his own practice. तो उन्होंने मुझे बताया ये एक कपल आता था उनके पास, और वो कपल में बहुत झगड़े होते थे, but they were crazy about each other. They loved each other. और जैसे जैसे उनकी मैरिज एज होती गई, झगड़े ज्यादा बड़े बड़े एंड इंटेंस होते गए. तो उन्होंने मुझे इंटेंस होता गया. प्यार was very very solid. Okay, that is why कि झगड़े भी इंटेंस थे, because you don't want to let go. So उन्होंने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब उनमें झगड़ा होता था तो एक दूसरे को they used to really demean each other. एक दूसरे को बहुत नीचा दिखाते थे. उन्हें पता था कि this person is hurting there, वहीं हर्ट करते थे, whether it was the husband or the wife. Okay, कोई भी एक आदमी जो गलत था वो हर्ट करता था. अगले दिन सुबह and the other person would be hurt. अगले दिन सुबह जब दिमाग शांत हो जाता था, या फिर इफ इट्स आफ्टर अल्कोहल तो वो उतर जाती थी, या रेज एंगर का सेशन उतर जाता था, तो अगले दिन whoever was the guilty party would say, I'm sorry, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, but you know ना, I love you. So Kushal Jain told me कि ये आप you're not even remorseful about how you've hurt because the excuse is love. तुम्हें तो पता है ना I love you, तो क्या हो गया बोल दिया, तो क्या हो गया बोल दिया है, but you know I love you and that is an excuse for disrespect. तो उन्होंने ये बात इस कपल को समझाई कि जब भी आप हो, so the first instinct of being in a couple relationship is कि हमें उनकी सारी vulnerabilities, सारे weak points पता होते हैं, और जब हमें उन पे गुस्सा आता है, जायज या नाजायज गुस्सा, हम उन weak points को खुरचते हैं. Because we don't understand respect. So there's always so what is it that men say? Suppose the girl's flirting with somebody. Oh, you are acting like a, WHORE. Or the woman would say, you are so कंजूस. तुमसे कहाँ पैसे खर्चे होते, या whatever they feel is the weak point of one another, वो उसको बहुत derogatory में बोलते हैं. So उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज समझाई कि लव तो आ ही जाएगा, लव के तो बहुत अलग अलग तरह के रूप होते हैं. रिस्पेक्ट को लाना बहुत जरूरी है. और आप कैसे रिस्पेक्ट लाएं? आप ये सोचिए कि अगर ये मुझे इसी तरह बोले तो मुझे कैसा लगेगा. सो बिफोर यू आर स्पीकिंग समथिंग, pause and think. And he told me a very good way to deal with it. He said when you are very angry with your spouse at that, या with your partner, उस वक्त आप उस जगह से चले जाएं, start writing. आप WhatsApp लिखें, आप मेल करें, आप वॉइस नोट बनाएं, पर भेजे नहीं. So the basic act of pausing, helps you understand what you're doing and understand the concept of respect. So I think a very important thing हम बहुत जगह सुनते हैं, पर हम इसको समझ नहीं पाते कि हम किस तरह लव को यूज करते हैं for respect. So I think respect is extremely important, and to understand how we are misusing love to बहुत सारी रिलेशनशिप्स में हम ये देखते हैं कि किसी बात पे सामने वाला गुस्सा करता है और उसको ये पता होता है कि कल सुबह वो इस चीज के लिए माफी भी मांगने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता. ही कांट हेल्प इट बिकॉज ही नोज दैट देयर वुड बी अ टाइम व्हेन ही वुड बी अपोलोजाइजिंग एंड ही समहाउ फील्स ही विल बी एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल गिल्ट वंस ही इज फॉरगिवन. पर मुझे बताइए माया, आपने वो पिक्चर थप्पड़ देखी, राइट?
हाँ आप कितने भी गुस्सा हो, आप अपने बॉस के साथ ऐसा करोगे, आप अपने फादर मदर के साथ ऐसा करोगे? सो व्हाट इज इट दैट गिव्स यू द पावर टू डू इट टू योर स्पाउस? आपने उनके सामने कैसे कंट्रोल कर लिया? सो यू हैव टू, सो वो अपने को अपने जहन में लाना पड़ेगा ये, बिल्कुल, है ना, कि that आप self check has to be there, yeah. And you have to first of all assume yourself in the shoes of the other person. How would you take the same kind of an insult had it been inflicted on you? So एंड द once थिंग you इज डोंट realize लेट देम सो that thing, इजी. you would. या राइट माया. एंड अगर उन्होंने एक बार ये किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, डोंट लेट देम गेट ऑफ सो इजिली. स्टैंड योर आर्ग्यूमेंट, स्टेट योर बाउंड्री और स्टैंड इट कि नहीं, ये नहीं चलेगा, सो इट्स ओके, लव इज देयर, पर डिसरिस्पेक्ट शुडंट बी देयर. सो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे मुझे लगता है कपल रिलेशनशिप के. See, we have had mixed response as you talked about the movie Thappad. We have had mixed responses from the audience What did because they say? all the men who watched it, they had this means when we were watching it, my husband didn't meet eyes to me, and even nor did I do that because there were certain questions, there were certain vibes which were going on, being exchanged between us, and it felt like I was the spokesman of the woman over there, and he was representing the man over there, and the question that his eyes had or any husband's eyes might have was कि इतना प्यार करते हैं, अगर जरा सी कोई बात हो गई, गुस्सा आ गया, कभी कभी हम we tend to lose our control and it happens. So it doesn't mean that you would fetch me to the court. So that is the thing ना माया, कि प्यार तो करते हैं ना, तो क्या हो गया? See, this is exactly the point. और ये तो साइकाइट्रिस्ट ने बोला है कि आप प्यार करते हो, पर why are you using it as an excuse? It's not that देखिए होगा, पर be aware. हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये कभी नहीं होगा, होगा ही, हमसे भी होगा. होना बहुत जरूरी है, हाँ, कि भाई ये मुझे नहीं करना चाहिए था. एंड टू अंडरस्टैंड कि आपने जो लव है, आपका बेइंतहा प्यार भी है, पर आपने उसको मिस यूज किया उसका. ये बात से तो यू हैव टू बी अवेयर. दैट इज द थिंग, बिल्कुल. I agree with that. So, and if your partner professes to love you a lot, but he has some trust issues and insecurities. So, from everything that I've read and I've understood, ये दो तरह का प्रॉब्लम होता है. One is the problem is with the person, and कि उनका कैरेक्टर या उनके पर्सनालिटी में एक डिसऑर्डर होता है, जो पर्सनालिटी वाइज दे आर शक्की होते हैं. They are suspicious of everything, but that's a very small percentage. Normally, people are generally fair and understanding, and of course, a lot of it has to do with their upbringing. But more or less, people are fair and understanding. If you sit with them and have a one-to-one conversation, अगर logically आप उनसे बात कर सकते हैं. पर हमारे पास ऐसे कई किस्से आते हैं जिसमें हमारे psychiatrists and experts eventually figure out कि वो either that woman or the man has a personality which is very prone to being suspicious, and उसमें आपको you should seek professional help. So आपको अपने पार्टनर और आपके जो इश्यूज है उसकी डिग्री आपको समझनी पड़ेगी. Is it something that you can manage? So you have to always be very honest and discuss. और अगर आपको लगता है कि वो unreasonable हो रहा है, so in India ना माया, हमें लगता है कि I've understood that we don't even understand when there's a serious problem. So अगर एक है प्रॉब्लम which may not be serious, बट वो आप अपने फ्रेंड्स और थ्रू आप शायद नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज हमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है. देखिए, हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स जिस तरह के कल्चर में दे हैव ग्रोन अप एंड व्हाट काइंड ऑफ मैन वुमन रिलेशनशिप दे हैड एंड व्हाट आई एम हैविंग एंड व्हाट माय किड्स विल बी वेरी वेरी डिफरेंट. बिकॉज मेरे माय डॉटर is far more equal than I am. I'm far more equal than my mom was, right? Yeah. तो ये cultural context, but we have ingrained what I have seen my mom and my dad, their relationship, that was a role model for me. फिर मेरी situation different थी, मैंने कुछ और किया. For my daughter, I have taught her to be independent. I have taught her to be assertive. I have taught her not to take things lying down. So she's also a mix of cultural, ingrained, like whatever has been culturally ingrained. So कई बार हमें ये नहीं समझ में आता है, जो हमारे दोस्तों को भी समझ में नहीं आता है. So whenever there is an issue, I would really recommend go and ask somebody who knows this, जो आपके लिए उसको decode कर पाए, even if it's one session. So this is about trust. पर एक basic चीज है माया, जो आप भी जानते हैं, जिसे जाना होगा वो चला जाएगा,
और जिसे रहना होगा वो रहेगा. इसमें एंड इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है. और When मैंने you are in love, yeah. it's a mutual respect and care and love undertaken. So once you love the same person with the same intensity and you are loved in return, so you should not be expecting, means that the person might be lost on See, the way so there to. is one thing. So there could be attraction. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि if your marriage or your relationship is 5, 10, 15 years old, शायद भले ही आपको किसी और से attraction होगा, but how much are you going to act on that attraction? There was a movie, I think After Sunset, I don't know, I don't remember the name. उसमें एक dialogue उन्होंने कहा, this was an old marriage of about 20 years old, where she was very seriously attracted to somebody and she asks a very dear friend कि मैं क्या करूँ? So वो ये कहता है उन्हें कि even if you leave what you've built in 20 years, तुम्हारे पास इतना समय है कि वो तुम किसी और के साथ बना सको. And you will never forgive your new partner for taking away from you all that you've built in 20 years or 15 years. So जिनके साथ we have had kids together, जिनके लिए हमने उनके पेरेंट्स का ध्यान रखा, उन्होंने हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखा, we have created a home together, we have been each other's safety net, वो उसको आप भुलाया नहीं जा सकता. So attraction और a serious relationship are two different things. Do not confuse them. Attraction होगा, आएगा, चला जाएगा. Let it come and let it move on. So do not create unnecessary drama in your life on simple attractions, on, basic things which are very natural. It's very natural to be attracted to somebody in a course of 30, 40, 50 years of couple relationship. पर उसको इतनी seriously मत लीजिए. I don't know if it makes sense. Yeah, you do make sense. And the question that I had in my mind was, अगर हमें मालूम है कि सामने वाला हमें बहुत प्यार करता है और हम इसीलिए उस रिलेशनशिप में हैं क्योंकि प्यार दोनों तरफ है, तो ऐसे में हमें असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो पर्सन हमसे दूर नहीं जाएगा. दूसरी बात, जब हम किसी नए रिश्ते में बंधते हैं, चाहे वो दोस्ती हो या व्यापार हो या कुछ भी हो, whatever bonding that we are trying to establish on a new level, then why do we remain mentally so alert not to hurt the other person or not to hurt his or her self-respect? But why do we take our own spouse or our own partner taken for granted? Why is he or she taken for granted? And we feel like क्योंकि हमें तो सालों साल साथ रहना है, झगड़ा करना अफोर्ड कर सकते हैं, कल माफी मांग लेंगे. तो अगर आपको लगता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रहा है, तो सामने वाले का भी होता है. And you have to assume things not in a negative way but positively try to anticipate कि इस एक्शन का क्या रिजल्ट होने वाला है and how am I going to make up for that and why do we have to need to make up once we can always remain conscious and not to go wrong. तो भी माया होगा. We are humans. See, we are humans, okay? तो काम, क्रोध, मोह, माया ये सब होगा. We will have our anger bursts. We will get attracted. हम झूठ बोलेंगे, हम उन्हें जो नहीं अच्छा लगता है करेंगे, वो हमें हर्ट करेंगे, हम उन्हें हर्ट करेंगे. I think that is a part of growing and being human. पर the thing is कि आपने जो एक चीज क्रिएट कर ली, unless and until there are major issues in the couple relationship, एक कोई अब्यूजिव है, फिजिकली अब्यूजिव है, या ड्रग प्रॉब्लम है, या मतलब कुछ मेजर इश्यू है, then it is understandable. अगर मेजर इश्यू नहीं है, so आप every day, every month, every year, the memory that you build now, that itself becomes stronger. वो that becomes the bigger thing. So उसको आपसे कोई नहीं ले जा सकता. तो फिर ट्रस्ट और इसकी बात ही कहाँ आई. पर आई थिंक वी आर ऑल्सो वेरी वेरी आई थिंक हम बहुत कंट्रोलिंग हैं. वी सो आई एक्चुअली रोट दिस कि हमें वी वॉन्ट टू नो द अदर. आप मुझे सब चीज बताओ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड देन वी आर बोर्ड बिकॉज वी नो एवरीथिंग अबाउट यू. हमें उनसे मिस्ट्री भी चाहिए और हमें उनसे सिक्योरिटी भी चाहिए. अगर मिस्ट्री चाहिए तो हमें कैसे पता चलेगा वो क्या कर रहे हैं, और सिक्योरिटी चाहिए तो फिर मिस्ट्री नहीं होगी. सो वी वांट पैराडॉक्सिकल थिंग्स फ्रॉम द सेम पर्सन. तुम you hold me close whenever I want you to hold me close, but when I want space you stay away. Right? So we want so we are like that. We are a mix of all of these things. It's going to happen. True. But be aware of it. That's it. मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप इसको रोक पाओगे, but just be aware. That's it. Yeah, that's what I'm saying. When we are getting into a new thing, that we do remain alert. We do remain aware. So why can't we do that on daily basis in our domestic life when we are in relationship with a person
who we have been sleeping every day with and waking up every day with, sharing our dreams and future together. So we need to be all the more conscious. देखिए ऐसा है कि taking for granted it's going to happen. अगर वो आप लोगे ही, पर बस taken for granted के साथ आप क्या क्या और ध्यान रख सकते हो वो ध्यान रखना पड़ेगा. बिल्कुल. So respecting your partner is something as simple as आप करके बोलना, or is it deeper than that? Oh, of course, it's much deeper. So okay, so here is something for Indian men. मुझे ऐसा लगता है कि this is for Indian men. I'm going to say something about Indian women as well. कि आपकी पार्टनर उसे क्या चाहिए? What is she passionate about? Where is her energy? Please think about it without putting your own expectations on her. कि शायद तुम्हें ये करना चाहिए, financially better होगा, या तुम्हारे लिए ये status wise better होगा. So give the space to the woman. That is respecting. Give the space to the woman to do what she wants to do in life. Okay. Do not put her in the same, bracket as you've seen your mother do with your father. So one of the problems, Maya, is कि जो अब अगर मैं अपनी मम्मी के बारे में सोचूं, तो उनके लिए first priority was us, the home, her husband. But honestly, with me, for me, it's work and my home, work and my kids. Okay. If I look at if you look at the generation now which is coming up, शायद कई girls के लिए work will be more than finding a life partner, or maybe life partner भी मिल जाएगा 35, 37. So the thing is to be able to respect a woman for what she wants. I think that is respect. Or secondly, to give space, not to want. तो एक ही हमारे में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. We want to be transparent. आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे हर पता होना चाहिए. पर why do you want to know everything? If think about it, Maya, मैं ऐसा कोई भी बंदा नहीं सोच सकती हूँ, और my close friend जिसको अगर if that person knew every single thought I've had about her, if I think of my best women friends, अगर उन्हें भी पता चल जाए जो मैंने उनके बारे में हर वक्त सोचा है, they are probably going to hate me, even though I may have thought far good things about them than bad. Okay, पर कभी तो मैंने भी कुछ. So why is this great need to know everything? Why can't you just let go? Why? So transparency तो मुझे बहुत our password should be shared. हमें पता होना चाहिए तुम ये इसकी प्रोफाइल क्यों लाइक कर रहे हो, और या फिर वो if she is dancing with somebody, तुम इतना क्यों डांस करी थी. What is all this यार? थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा फेथ रखो. You should always have faith, in yourself. So जिस तरह के इंडियन मैन की आप बात कर रही हैं, उस तरह के इंडियन मैन को ये भी लगता है कि हमारी मदर को हमारे फादर से इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती थी जितना कि तुम हल्ला मचाते हो कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास स्पेस नहीं है, तुम्हारे पास इंडिपेंडेंस नहीं है, यू आर नॉट means at ease with your life, or you are not able to accumulate whatever you want, or you feel like you have laid down all your happiness to raise your kids or something. I think those things kept smothering a mothers as well, but they never had that freedom of speech in families. They never knew how to assert themselves, and even if they did, they knew it would bring chaos in their life. So actually they would rather keep quiet. वो सारांश पिक्चर में उसने कहा था ना, वो दैट ओल्डर कपल अनुपम खेर और जो भी थे सारांश में, जब वो यंग कपल आता है, तो when Anupam Kher's wife, I've forgotten, I don't know who played that character, तो उसने she heard the young couple saying कि तुम मुझे प्यार करते हो ना. So then she goes and asks Anupam Kher कि do you love me? 60 years के एज में. So हमारे पेरेंट्स को एक दूसरे को I love you कहने की जरूरत नहीं होती थी. Romance was never the point of marriage. For us, romance, expression of love, it is very important. पहले वैलेंटाइन कहाँ होता था? कभी हमारे पेरेंट्स ने वैलेंटाइन बनाई थी क्या? तो ये जो $1 billion इंडस्ट्री है ना, जो लव पे चलती है, chocolate, give chocolates to someone you love, give diamonds, give perfumes, hug day, and proposal day. So media is telling us, teddy bear day. So media हमें बार बार कहता है कि अगर आपने इजहार नहीं किया प्यार का, तो आप में प्यार है ही नहीं. So we have to actually sit and also think कि what are we doing, what are we thinking, what is the real meaning of love. और ऐसा है ना माया, लव का जो एसेंस है ना, मुझे लगता है चेंज होता जाता है. नहीं, लव का जो फ्लेवर है, जैसे जब when a couple comes together, there is a lot of
romance, there's a lot of sex, there's a lot of craziness, there's crystallization. You think they are perfect, you are perfect, you can't be away. As you get to know each other, जब हमें उनकी negatives पता चलते हैं, उनके vulnerability पता चलते हैं, जो हमें annoying लगते हैं, but then we have kids, so then then it changes into being a co-parent. Then you care, अगर husband ने बच्चे को रात में संभाल लिया तो he loves me, या अगर wife ने कुछ special खाना बना दिया, even with her so many whatever duties, she loves him. So it becomes caring. Then it becomes handling the finance together. That becomes love. आप दोनों किस तरह से अपने फाइनेंस को जोड़ के, आप किस तरह से you're giving the best to your kids, or you're uplifting your social status. So then you become team players, So इस तरह से love, and then once the kids go away, empty nest हो जाता है, शायद फिर तब वापस से ये romance या companionship आता है. So love is not just romance. Love is... These are all various shades which keep varying from time to time. Exactly. And I guess each new responsibility which is laid on us gives more intensity to your love. Because when you are raising kids together and the husband is all the time worrying about your physical needs and requirements because you are nursing your baby day and night. So if he keeps worrying about you, it is an expression of love. We need not say many words in an elaborated manner. We just need to show. And this is shown perfectly well when we care for each other. So sometimes care is love. Sometimes giving space is love. Sometimes supporting in what you want to grow is love. Sometimes sometimes doing 80% when your partner is only doing 20% is love. Sometimes doing 20% when your partner is doing 80%, that is love. The partner is showing. Sometimes आपको पता है वो wrong है पर आप चुप रहे हो, that is love. So love has many shades, many expressions. Let's not just, put it on one. Like, let's not just put it in that. Perfect compatibility. Wherever you feel the other person needs you, you have to be there as a strong, solid support. That is love. That is love. नहीं, कभी आप शायद support ना भी करें. Sometimes in a couple, you want, but सामने वाला नहीं समझ में आता. उससे नहीं समझ पाते कि, but तो क्या हुआ? इसका मतलब love नहीं है. नहीं समझ में आया. So love is continuously finding each other, but it comes in very, very different, terminologies. And we should and we should be, हमें उसके बारे में, we should be open to it. True. Raksha, should there be any crystal clear terms mutually agreed upon, if not in black and white before marriage or coming into a relationship? But ये देखा है ना, अक्सर बहुत बार होता है कि बाद में एक व्यक्ति ये कहता हुआ पाया जाता है कि बोला तो ऐसा था पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, या मुझे अगर पहले पता होता तो, ये जो तो लगा के डैश छोड़ दिया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिमोर्स होता है, बहुत बड़ा रिग्रेट होता है कि had I known the person to be like this, I wouldn't have gone for this relationship. So क्या लगता है, क्या क्या चीजें हैं जो पहले से बात की जा सकती है जिनके बारे में कि बाद में ये सब चीजें ना हो, कि हमें पश्चाताप नहीं हो कि मैं गलत व्यक्ति के साथ हूँ, ऐसा नहीं महसूस हो? So actually माया, हमारी प्री मैरिटल काउंसलिंग है, तो हम ये इस पे हमने काफी आर्टिकल्स किए हैं, and I've gone in depth in this. So there are 4-5 major things जो हमारे यंग रीडर्स अगर देख रहे हैं, इसमें 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें देखना चाहिए. So I had gone to Bangalore. उसमें I went to this अहल्या, प्रोफेसर अहल्या. तो she's a marriage expert there. उसके पास बैंगलोर के most young couples were coming for divorce or separation. तो उन्होंने मुझे एक बहुत peculiar केस बताया जो बहुत आ रहा था कि whenever one of the spouse is from a big city and another from a small city, तो वो दोनों, भाई कोई आप सोच लीजिए कोई 3-tier सिटी से है, राउरकेला, और कोई बॉम्बे से है, वो दोनों IIT बॉम्बे में मिले, पढ़े, they found each other attractive, फिर शायद काम भी उन्होंने एक साथ कहीं किया, they were crazy in love, they get married, before they know अपने अपने जॉब्स पे उन्होंने एक घर रेंट पे लोन पे ले लिया, जितनी टीवी चाहिए उससे बड़ी टीवी खरीद ली, बड़ा फ्रिज खरीद लिया. 6 months, 1 year, 1.5 year down the lane वो कहते हैं अरे तुम तो बदल गए. बट द थिंग इज वो बदले नहीं. एक स्मॉल सिटी और बिग टाउन में व्हेन यू ग्रो अप, उसका जो एक कल्चरल डिफरेंस है वो आपके जहन में है. So what I think you have to, so there are a lot of things you should understand before you rush into a relationship. So one of the things which a couple should always talk about is, how do you see yourself? How do you see your day like? Will the woman be working full time?
half time. So what is the understanding? I wouldn't say expectation because it's a couple's decision. What is the understanding कि आप किस तरह के काम, किस तरह, how much will you be involved at work? Okay, and they should discuss it. So it'll be a part-time work, it'll be a full-time work. अगर रात में रहना पड़ा, if I keep getting promotion, if the woman keeps getting promoted, then where the marriage is going to be like, what is it about the salary they will draw? You know, all of those. The second thing is kids. A lot of couples बाद में have a problem because one wants no kids, किसी को एक चाहिए, किसी को दो चाहिए. Third, will I be living in a joint family or alone? Will I be living with your parents or not? So, and then for finance. So if both of them are working, how do you see your finance? If one is dependent on the other, what is the financial situation? So there are about 6-7 things. There's an article, if you want, I can share with you. ये आपको, मतलब you should not, this is not like a prenup. This is like, take your time to understand these aspects about each other. Because when we come together, the love and the romance quotient is so high that आप इनको question नहीं करोगे. But everyday life में आपके ये irritants होंगे. So try and figure it out. And I always feel that every couple should go to a premarital expert before they actually decide to get together. तो अपने में जो arranged marriage होता था ना माया, वो क्यों work करता था? Because हमारा social, economic, cultural, situation same होता था almost. 18-20, 19-20. So वो एक तरह के घर से लड़की दूसरे तरह के घर में जाती थी. थोड़ा conservative, थोड़ा liberal, पैसे थोड़े कम, थोड़ा ज्यादा, बहुत difference नहीं होता था. So that one big thing about the cultural difference was taken care of. Love marriage में तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो, और फिर 1.5 साल बाद जब प्यार का नशा उतरता है या रोमांस का, तब पता चलता है अरे ये मैंने क्या किया. So it's better that you start having these conversations. But I guess exceptions are always there, because once two people are thrown into a relationship by the family's mutual consents and everything, and later on then they realize that they are not compatible enough. Absolutely. Then even the arranged marriage would be done. So the biggest problem with arranged marriage is compatibility. पर आजकल एक नया तरह का arranged marriage आया ना, love cum arranged marriage, कि भाई 3-4 महीने पहले मिलो, एक दूसरे से बातें करो. So whatever, definitely. Actually ये दो जनों को एक साथ आना और more or less अच्छी जिंदगी बिताना is not as easy as it seems. It's a challenge. Yeah. So I guess while entering into a relationship, both the parties should be at the same page, not one invested more than the other. And they should have certain things discussed. Means कुछ लोगों को लग सकता है कि प्यार कोई समझौता नहीं है, कि बहुत सारी शर्तें रखी जाएं या पहले से तय किया जाए कि क्या करने दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा. लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं शायद जो कि हम अगर एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चल सकता है कि सामने वाले की मानसिकता किस तरह की है. ब्रॉडली तो आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा. ब्रॉडली तो क्या एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है विद ईच अदर, हाउ द लाइफ विल बी टुगेदर, दैट इज यू हैव टू डू इट. वो तो आपको एक डिस्कस करना ही पड़ेगा. बिकॉज आजकल एवरीबडी इज एजुकेटेड विद अ माइंड ऑफ देयर ओन, विद देयर इंडिविजुअलिटी, विद देयर थॉट प्रोसेस. सो ये तो this will not, अब ये नहीं चलेगा. अभी तक शायद चल गया, अब नहीं चलेगा. That's what I think. So Raksha, how does possessiveness seep into a relationship after the initial lovey-dovey period? And do you think the butterflies that were fluttering in the stomach earlier when you were crazily in love with each other, do they die away when you mark the person to be yours? So yeah, this is a very big psychological thing ना, कि the moment you feel कि वो है तो फिर आप दूसरा कुछ चीज आपको चाहिए, right? I think this is a very natural human tendency. But अगर आप ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले. और देखिए possessiveness का तो ऐसा है माया कि insecure, अगर हमें मतलब we want constant or at least periodical validation कि तुम मेरे ही होना, क्योंकि अगर तुम नहीं हो, especially for women, see for a lot of women marriage is their meal ticket still. उन्हें अगर marriage नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा उनका, because they are not financially independent. So वो possessive होना is also a matter of survival, you know. Is that possessiveness or this is insecurity? मतलब insecurity का expression possessiveness है ना, कि आप उन्हें क्यों देख रहे थे. So, you know, and for a man, possessiveness for a woman actually is about mate guarding.
कि अब तो खैर डीएनए टेस्टिंग से पता चल जाता है, बट अ मैन हुज whatever you've created, you want it to be passed on to your own genes. So it's basically sexual exclusivity कि मैं उसे कैसे कंट्रोल करूं, राइट? सो एक्चुअली एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, एक्चुअली नॉट अ स्टोरी, दिस इज रियल लाइफ थिंग, कि many many eons of decades ago, decades नहीं, centuries ago, when we were on trees, हम humans 100-150 की बैंड में ट्रीज पे जब कूदते थे, when we had not discovered agriculture, so there was free sexuality. वो 100-150 की जो बैंड थी उसमें everybody used to take care of, so community kids होते थे, वो बच्चे कोई भी किसी को फीड कर देता था, मतलब काफी हिस्टोरियंस की बुक में ये है. बट व्हेन मैन क्लाइम डाउन एंड डिस्कवर्ड एग्रीकल्चर, जब उसने वो फील्ड मार्क किया और उसमें अपनी मेहनत लगाई, उसमें सो किया, उसका जब अनाज पनपा, तब उन्हें लगा कि ये तो मेरे ही बच्चे को जाना चाहिए, जब मैंने, ये किसी और को क्यों जाएगा. That is where from controlling the sexuality of your woman came into place, because a man could never know कि who's the father of the child at that point. So exclusive और controlling the sexuality, जो जिसको आप possessiveness भी कह सकते हो, वो man में इसलिए आता है because I want to be the father of your child. That's it. Because my thing should go to my progeny. And for women, it is about not losing the meal ticket. It may sound very, very prehistoric, but it is still there. It is pretty much there. That's how it is, like asking on phone several times a day, Janu, you love me na? Janu, you still love me na? मैं तो ये मानती हूँ, जिसे जाना होगा वो चला जाएगा, जिसे नहीं जाना होगा वो नहीं जाएगा, and have faith in what you've built. I believe that. Be honest, give your 100% and be earnest in the pursuit of happiness together. Because once you have tolerated, undergone the rainy days together, when you have faced adversities together, then definitely that's going to glue you together too. Exactly. वो memories आप किसके साथ कैसे बनाओगे? When somebody's parent has passed away and you've given them the shoulder, वो आप, you cannot recreate that with somebody else. You cannot recreate the first moment you saw a kid which is half you, half him. So there are a lot of things. So have faith. I always feel have faith. True. When two separate identities become one entity, why does it usually lead to one or the other feeling smothered? Because the other person might feel the first person to be happy, but there are certain things which keep broiling inside. And this is how these counselors and these people come in the picture, because they extract those. Yes. Actually क्या था माया, देखिए अभी ऐसा है कि जितना इक्वल रिलेशनशिप होगा उतने ही प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है? सो अगर आप हमारे पेरेंट्स को देखो तो उसमें हु वाज द डिसीजन मेकर? द मेन. अगर घर पे फ्रिज भी लाना होता था तो वही खरीदते थे जाके. हु वर द प्रोवाइडर्स? मेन. हु वर द प्रोटेक्टर्स? मेन. पर अब आज हु आर द डिसीजन मेकर? न्यूक्लियर फैमिली हो गई है. सो कपल टुगेदर दे मेक डिसीजंस, तो झगड़े होंगे. Who's the provider? Both of them are providing. शायद women का income savings में जाता होगा. Maybe it is not as much as the man's, but still. So they are both co-providers. Who's the protector? In this world of cyber, in this world of when you are going out in the middle of the night to work, you can't really protect each other. You have to understand the rules of protection yourself. So जो man का जो एक defined role था, that has changed. Okay? और उसके कारण जब दो जन एक रिलेशनशिप में, पहले इक्वालिटी थी ही नहीं, विमेन की घर पे थी, मेन की बाहर थी, दे हैड देयर ओन डोमेन्स. नाउ दोस डोमेन्स हैव गॉटन they've overlapped and they've gotten mixed up, okay, because of these three things. जब ये होगा तो ऑफ कोर्स कभी एक स्मॉदर होगा, कभी दूसरा स्मॉदर होगा. सो आई ऑलवेज फील माया कि कपल रिलेशनशिप कभी 50-50 नहीं होता, कभी 30-70 होता है, कभी 70-30 होता है, कभी 10-90 होता है, कभी 90-10 होता है, कभी एक ज्यादा करता है, कभी दूसरा ज्यादा करता है. So it's okay. हाँ, पर अपने जो आपके मेन जो आपके लिए जो जरूरी है, stand up to those. You stand up for yourself and you respect the other person's boundaries. True. So within this context, do you think live-in relationships are more suited to the present age? Is it not about wanting not to be giving that long-lasting commitment, and that is how they want to remain in live-in?
So I don't know, Maya. I mean, we've been trying to understand live-in relationships. समझने की कोशिश कर रहे हैं उसकी psychology. I actually don't know about this. कि इसका क्या होगा? Because the thing is that what when the the lust wears off? What when the romance fades? फिर आपको क्या एक कपल को रख सकता है साथ में, मुझे नहीं मालूम. What when when there are kids? आजकल तो खैर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इवन इन अ लिव इन रिलेशनशिप यू गेट अ लॉट ऑफ राइट्स, बट आई ऑनेस्टली कांट आंसर दिस क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज अ वेरी डीप क्वेश्चन एंड थोड़ा इसे और समझने की जरूरत है, थोड़ा और समय जाना चाहिए. I think our cinema is also at work in the same direction. There have been movies where we get to have glimpses of this kind of commitment and non-commitment wala attitude in the youth these days. एक और गाने का मैं जिक्र करना चाहूंगी रक्षा. काफी पुराना गाना है. दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या ना किया, दिल दिया दर्द लिया. तो जो छोटे छोटे सुख और खुशियां और एम्बिशंस बड़ी बड़ी, इनका जो हम त्याग करते चलते हैं ना बड़ी खूबसूरती, ये सोचकर कि मैं बहुत महान हूँ और हम दोनों में से मैं ज्यादा महान हूँ, इसलिए मैं ये सब चीजें छोड़ती आ रही हूँ या छोड़ता आ रहा हूँ अपने परिवार के लिए. लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब मैं इतना सफोकेटेड फील करती हूँ या सामने वाला इतना सफोकेटेड फील करता है कि वो बिल्कुल फिर उस वक्त बर्स्ट हो जाता है और उतना करना बंद कर देता है विदाउट केयरिंग, मीन्स थ्रोइंग ऑल कॉशंस टू द विंड्स, कि उसको कोई अब अच्छा समझे या नहीं, उस अच्छा होने के फ्रेम में फिट होने की उसकी ख्वाहिश खत्म हो जाती है. और सामने वाले को ये लगता है कि पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, अब ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया कि तुम ये मेरी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन रखने की आदत तो सामने वाले की मैंने ही डाली है. And now I am done with it. I have called quits to this kind of a habit of mine where I had to put everybody else prior to me. And now the other person naturally feels like bad कि भाई you were not used to this thing. Why are you behaving like this? Very true. तो कहीं ना कहीं हाँ, तो बाद में हम जो बोलते हैं ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि एक बार हम पहले से बताकर चलें कि ये मेरी लिमिटेशंस हैं, मैं इस लेवल तक जा सकती हूँ, इसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगी. डोंट प्लीज एक्सपेक्ट दिस मच फ्रॉम मी. आई थिंक दैट वुड बी स्मूथ रादर देन फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड लेटर ऑन बोथ द पार्ट्स. एब्सोल्युटली. मिलन कुंदेरा ने कहा है कि बी वेयर, अगर आपने अपनी शादीशुदा जिंदगी में फर्स्ट डे इफ यू सर्व ब्रेकफास्ट ऑन बेड टू योर स्पाउस, he is going to expect to be served every day. So आप जो भी उन्हें जो आदत डालो ना, सोच समझ के ही डालो. True. Antara Datta is there and she's watching this and she's asking, it is not male versus female, but it's the upbringing of the person that impacts the relationship more than anything. And absolutely. Easier said than done. Is it possible to follow 100% this wonderful discussion in real life? I guess we are having the discussion what we actually feel troubled by, those situations we are assuming and answering those very questions. So if Antara has any other question, she can definitely proceed with it. No, but I would like to tell Antara कि even if it is about upbringing, it is also about gender. एक gender specific roles, it's very, very, it's been there for a very long time and it is there. It is men are from Mars, women are from Venus. उसमें कुछ reality है. That's one. Secondly, कुछ भी चीज 100% नहीं होता अंतरा. In fact, things are always, कभी कुछ हम कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, कभी बहुत ज्यादा करते हैं. But it's all a matter of understanding and it's all a matter of looking back and thinking कि इसमें क्या सही था, क्या नहीं था. कई बार मजे भी कर लो, कई बार नहीं भी किया. So it's all about actually experiencing the experience fully and trying to look at it whenever you are unhappy about it. I think it's more about introspection and trying to understand what was not okay whenever you're not okay. I don't know if that made sense, but. So sacrifice is a much glorified term and amidst us, the women, more than men. And later on, it certainly, sooner or later, it does take you to frustration and bitterness. तो ज्यादा अच्छा है कि आप बता के चलें कि क्या आप कर पाएंगे और कुछ ऐसी चीजें भी आप रख के चलें कि दिस इज वेयर आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज बिकॉज दिस इज अगेंस्ट मे बी माई मोरालिटी, my moral principles or the principle that I have been brought up on.
So this is something where I draw a line and I won't move forward with it. रक्षा, कुछ बातें अनचाहे में, जाने अनजाने में हमसे ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं और हमें मालूम होता है कि हम गलत हैं, हमसे गलती हो चुकी है. We tried our best to avoid that certain point of time where we did that mistake, but it actually happened. So do you think we should be hiding it in order to not hurt this person? कि मालूम है कि सामने वाले को तकलीफ होगी तो मैं वो नहीं बता के चलूं, या admittance is a must in a relationship? So I think it's very subjective. हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, but how important it is. हर चीज की एक relevance और डिग्री होती है. If it is something which is very important, I mean, you know, you have to understand. So there is no blanket rule. अब हर, जैसे कहते हैं ना, pick your battles. So वैसे ही मतलब जो चीज आपके फंडामेंटल्स, आपके बेसिक्स ऑफ रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है, वो तो आपको बताना पड़ेगा. किस तरह से ये भी हो सकता है ना कि मेरा मॉरल आउटलुक मुझे बोलता है कि ये चीज बहुत कैजुअल थी, कुछ भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट वाज गुड इनफ, इट्स ओके, इट्स अ लाइट थिंग, and the other person takes it very seriously because he has already made it clear to you that this is where he will feel offended. So now you know you have offended him. He is ignorant, he is sweetly ignorant of that, but you know that you have offended the person. So how do you take that? Should acceptance be there? Should admittance be there? Should you tell it that you have done this thing and be ready to take the consequences? See, if both of them have had this conversation about something which is not liked by one, but is thought as casual by the other, अगर आपकी वो conversation हो चुकी है, then you can't shove it under the carpet. Then inadmittance is not an option. फिर आपको उससे बात करके you have to find a mid route. Mid route ना भी हो, so then you can also agree to disagree. पर उसको छुपाने का मतलब नहीं है. I don't think so. I feel because then you are staking the trust and faith of the whole relationship. So अगर, because you know, then it could be good for him also ना, वो भी ऐसा कह सकते हैं कि भाई तुम्हें ये पसंद नहीं है, मुझे मालूम है, पर I think it's casual. So it is good for both, you know, that way. वो आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा. So I think something that you've had a conversation about, then you should bring it and you should figure out, stand your ground. If you think you are right, stand your ground. No, I know I was wrong. If I know I was wrong, I might be hurting the person if I disclose it. So should I disclose it? Or I should keep it a secret within me and feel guilty all the time because I know I'm going to. I don't know. I think it's very individual. I don't think I can answer that question. What do you think? आप क्या सोचते हैं? I think I should be ready to take the consequences if I already know that I have wronged the person. I should be ready to take the results. I should be there to face the music, or I should be there for an open and blunt discussion with him or her, and just admit that I did it ignorantly, or I didn't realize it could hurt the person so much, or I'm ready to take the punishment. और आप ऐसा कह रहे हैं, you realize कि उन्हें hurt हो रहा है, तो वो तो आपको पता ही है कि जब आप कर रहे हो तो सामने वाले को, मैं ये बात बताऊंगी तो हर्ट होगा, लेकिन बजाय इसके कि मैं इसको और लंबा छुपाती चलूं और बाद में पता चलने पर 4 गुना ज्यादा हर्ट हो, I think things should be laid on the table and be discussed. Yeah, so absolutely. Right? See, it's very, very individual. Yeah, absolutely. Yeah. So not everything can be pre-decided, you know, क्योंकि बाद में वही होता है ना, फिर गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोर, तो लाख करें कोशिश, खुलने में वक्त तो लगता है. मुझे ये तो जरूर लगता है माया कि रिलेशनशिप में बेसिक ट्रस्ट और सम सेंस ऑफ बेसिक ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी तो होनी ही चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी, आपको शायरी फिर कही बहुत ही अच्छी थी. गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोर, लाख करें कोशिश, खुलने में वक्त तो लगता है. तो वक्त देंगे हम, अगर हमें लग रहा है कोई गांठ लग गई है और वो हमारी वजह से लग गई है, तो हम वक्त देंगे, लेकिन वो गांठ खुलनी चाहिए. Beautiful, very nice, very well put. Because we can't pre-decide everything, and absolutely. we are mortal fabric. We are liable to go on changing shades. If we don't change shades, we are dead.
So Absolutely. according to the phases that we have been going through, हमारे अंदर बहुत सारे changes आते हैं. हम ना केवल physically change होते चले जाते हैं, एक तरह का पहनावा, एक तरह की चीज से बोर हो जाते हैं. We acquire different thing, different persona, and similarly we keep wearing mask from phases to phases, Yes. and Yes. we change. If the other person who I have been loving, if I expect the person to remain same throughout my life, so I think that It's would not be going to work. over expecting Yeah, something. absolutely. It's not going to work. और अगर सामने वाला आपकी ग्रोथ को भी एक नेगेटिव चेंज समझता है तो Well, वो तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है. The आपको growth ये लग रहा है कि has आप to ग्रो be. कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को ये लग रहा है कि यू यूज्ड टू बी सो सबमिसिव एंड यू यूज्ड टू बी सो वही मैंने कॉय आपको एंड यू बताया. यूज्ड टू बी guided by me at every step. Now, what is this rebellious side of yours? I don't understand. This is not you who I loved. You have No. changed a lot. No. Please visit a counselor because you are not wrong. Growth is your fundamental right. Please grow. The other person has to understand. शायद समय लगेगा समझने में, समझेंगे. आप अपना growth मत छोड़िए. I think we pretty much well shot the time, no? Maya, 51 minutes हो गए. So let's just take a Yes. few while. So there are two options. Either we adjust to the change, because the person we become in due course of the time, or we call it quits, drift apart. So what is your expert advice? See, it depends on how serious your relationship is. मैं ऐसा कहती हूँ कि आप वो हर कुछ करिए to save the relationship that you can, so that when you, if you cannot, you know, then अगर आपको ये लगता है कि आपने सब कुछ कोशिश कर ली, अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आप quit करिए, because it is not easy to just quit. So give the person some chance, and बाद में आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये कोशिश नहीं की. So explore all your options, use them, and if it doesn't work, अगर वो बंदा change ही नहीं हो रहा है, वो लड़की change ही नहीं हो रही है, then of course think seriously. But we know, we got a lot of cases where the couple separated for 6-8 months and then they got back together, and that really worked. So कई बार couples को खाली एक थोड़ा separation की जरूरत होती है थोड़े समय के लिए. So everything doesn't need to be like this or that. When it comes to actually calling quits, जब हमें लगे कि रिश्ते में हमें थकान महसूस हो रही है, या जो मेमोरीज जो हमने साथ में बनाई थी वो ज्यादा अच्छी हैं बजाय इस व्यक्ति के जो कि काफी बदल गया है और मैं उसे उतना पसंद नहीं कर पा रही हूँ, तो सिर्फ इस डर से मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे या लोग मुझ पे हंसेंगे. If I call quits, I would be laughed at or I would be the butt of ridicule. पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो होना पड़ेगा ना. If we are talking about a woman who's been working, if you're specifically speaking about women, so you do need some kind of financial background ना. अगर आप काम कर रहे हैं या आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, because the other person doesn't want to move out, you are the one who wants to move out. So I don't know whatever the alimony laws are or whatever. So see, it is not just about emotions and mind, na. There are a lot of practical things which come. So it's a very, very complicated question and a lot of things need to be addressed. But I definitely think कि अगर ये couple में ये issue आता है, so I think you should seek help. जिन्हें ये जो professionally they've been trained to ask you the right question so that you can come to the right answer. Question पूछने वाला भी तो होना चाहिए ना जो आपको right questions पूछे. So you should always go out and seek help, I feel. About True. this. So even I would like to say that to my guidance, my audience, that don't cling to the person just because you have had a good past with them or you have had beautiful memories with them. If the person ceases to be the person, for all those reasons you fell in love with that person, I guess this is the right time to move out. If you are independent, if you are capable of handling your own life your way, you should definitely move out. And don't be with that person for the sake of memories. Be there for the person who he is. And abuse. And do not take abuse. Physical abuse to bilkul nahi. Yeah. So there is a play called Are Flowers Enough? Flowers Are Not Enough. वो I think YouTube पे है. आप कहिए जो a person who is into physical abuse, abusing, whether a woman abusing her husband or a husband abusing his wife, physical abuse नहीं जाता. वो बहुत मुश्किल से जाता है. So if anybody is in a relationship where there is physical abuse, जितना भी वो कल सुबह उठ के रोए करे, वो नहीं जाएगा. So get out of that relationship. Speak to someone. True.
or drug abuse. Raksha, ये I've सब heard नहीं of your new Yeah, sorry. I've heard of that new venture of yours, the relationship counseling in Bonobology. So would you like to enlighten us on that? नहीं, सो यही माया मुझे समझ में आया कि हमारे देश में एक तो सीकिंग हेल्प, काउंसलिंग इज वेरी स्टिग्मेटाइज. मतलब आपको लगता है कि मुझे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, पर एक्चुअली प्रॉब्लम कई बार होती है. अब्यूज होता है जो हमें पता ही नहीं होता है कि अब्यूज है, या फिर इश्यूज हैं विच कैन इजिली बी सॉल्व बाय समबडी हु इज एन एक्सपर्ट. सो सबसे पहले तो हमें पता नहीं होता है. दूसरा, अगर हमें पता होता है तो वी डोंट नो होम टू गो. अगर आप इंटरनेट में गूगल करोगे तो इतने सारे लोग आ जाएंगे. सो वी हैव got about 40 people on our panel. हमारी वो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. From everything they manage to sexual issues in a marriage, boredom, incompatibility, financial issue, breakup हो गया है तो move on. I'm not, boys are rejecting me, girls are rejecting me, मैं क्या कर सकती हूँ? About, dealing with in-laws. We have a whole load of extramarital affair is a very big thing. कि भाई my spouse had an affair and now I can't be intimate. So we have experts in every field who've been pretty senior, and so we have this whole platform of you can come, you can book a session at a very reasonable rate, और आप video conferencing, WhatsApp video, Skype, अलग-अलग options हैं. You can book it from the comfort of your home, and you can have, you can speak to somebody who knows, who will be able to ask you the right questions. Or so the counselors never get answers for you, they help you find your own answers, but you have to at least understand कि आपका क्या है. So we've just launched this online counseling, and it's actually doing very well. So we have counselors from 400 rupees an hour to about 3,000 rupees based on years of and doctors. So yeah, if anybody has an issue, please seek help. And you are, आपकी जिंदगी आप हो तो जाने on behalf of my audience. Bilkul. Thank you. I wish you on behalf of my audience and myself that for all your future endeavors in the field. And thank you so much for giving your valuable time to us. Thank you, Maya. It was wonderful having, and आपकी शायरी मुझे बहुत पसंद आई, बहुत मजा आया. मूड एकदम सेट हो गया शाम का. वो शायरी मेरी नहीं है, वो शायरी मेरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पर आपका बोलने का लहजा भी तो बहुत अच्छा है. जज्बात हैं जो कि हम सब जिनसे रिलेट कर पाते हैं. बिल्कुल. Thank you so much, Raksha. Thank you. Okay, good evening.